Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you can see, topic show is mathematics, chapter number 8, Introduction to Trigonometry. So let's start. First of all, हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी वर्ड मीनिंग क्या है. So far as trigonometry is concerned, the word trigonometry has been derived from three Greek words. Tri means three, gon means sides, and metron means measure. So trigonometry is that branch of mathematics that deals with the study of the sides, that deals with the study of measurement of sides of a polygon. The polygon which we have to study here is a right angled triangle. So far as our syllabus is concerned, हमें जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ डील करती है एक पॉलीगन के साथ जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल. सो हम डायरेक्टली आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर. सो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, फिर हम देखेंगे इसके बेसिक्स क्या होते हैं. A, B and C. Clearly, angle B is a right angle. A right angle triangle is a triangle in which one angle is 90 degrees. This is the basic definition of a right angle triangle. The side which is opposite to the right angle is called as hypotenuse. Kashir put, so side is opposite to right angle that is on hypotenuse. Now, so side यह person ये right angle axis बिहित या ये right angle बनी that is on base. Clearly ये triangle from the base please. The so side use an right angle बनाई that is on zana आप अनाव जो altitude और ब्याह मानकर perpendicular. ठीक ये डिपेंड करता है तो कुछ नाम नहीं है. Go like this right angle triangles में जो side आसन तिमन त्रेन side च पानी नाव. Longest side या so side is right angles opposite आसन ताचमान hypotenuse. यह पर जो right angle बनी ताचमान base. तो use बनाए ताचमान altitude या perpendicular. क्या चीज ना यूज़ इन hypotenuse यूज़ change गसान किया. वो तर फिक्री बिकास वन यूज़ change गसान किया. For example, ऐसे मानो BC च base तो AB च perpendicular. And such clearly hypotenuse AC. Now, अगर इस BC मान हो altitude या perpendicular, तो AB मान हो base, and साथ ही hypotenuse AC. That is, चाहे इस perpendicular, चाहे इस AB मान हो perpendicular या base, BC मान हो perpendicular या base, hypotenuse is हमेशा AC. वो AC चुन change कर सकते हैं. इसलिए इस side AB तो BC, ये हम कुछ पान में change करें. Okay. Now, पचास angle ज़िया, ये तो क्योंकि आखिर में 90 degree angles and property of a triangle शवानन जितने angle जमा एक triangle शासन 180 degree. Since 1 to 90 दोनों जमा 90 none हेगने ये मत है angle मत हेगने कहीं ते 90 ऐसे. गो ये दोनों angles हैं acute angles. एक ही angle था वो इस नाव alpha base का नाव theta. चलिए ये में दोनों acute angles पर चेस्ट trigonometry का ही apply. ये तो सा confusion रोज़न अक्सर बैठे. See, शायद इसे को trigonometry करें apply acute angle. No, this is not true. इसे को trigonometry करें apply कुंते angles. Trigonometry है कोई से apply करें acute angles, right angles, straight angles, whole angles. That is practical angles है कोई trigonometry apply करें. मगर उसे standard syllabus जो आपने चेस खरीद trigonometry करें apply acute angle. Okay. Now, why? And bro, because trigonometric ratios and trigonometric operations defined which because angle का नियम में select या फिर बेम trigonometric operations है. मान लीजिए
बह तुलन एंगल थीटा या तुलन अल्फा तिकाज यम एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल तुलन बह तुलन थीटा कह अल्फा तुलित ये कोई मसला नहीं है बह तुलन थीटा मैं एंगल थीटा कंसिडरेशन में क्या मैं एंगल थीटा कंसिडरेशन ये एंगल थीटा को कंसिडर अथ पे कर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन ये थीटा एंगल से तम साथ वन एंगल ऑफ एवोल्यूशन क्या एंगल ऑफ एवोल्यूशन दिस इज द प्लस पॉइंट जी इन कुछ एग्जाम्स में एंगल ऑफ एवोल्यूशन क्या हाँ कह था याद वैलिड गुड कह था नो प्रॉब्लम ये थीटा जो हम कंसीडर को इस एंगल ऑफ एवोल्यूशन पे ये एंगल ऑफ एवोल्यूशन वन में उस पर कर गोइंग तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन ओके नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सिलेबस इज क्वाड्रिक टॉपिक टू अपने क्वाड्रिक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या सो ऐसे सिलेबस trigonometric ratios. ये जो trigonometric ratios छे या क्या लिखा वनो अस ये छ operations ये deals करन with the angle and side of a right angle triangle or polygon. Trigonometric ratios देवन में क्या trigonometric ratios क्या ये छ तीन operations ये जन deals करन with the angle and side of a polygon क्योंकि ये बस polygon right angle triangle तो ये तक समझ trigonometric ratios गए तीन operations ये deal करन with the angle and side of a right angle triangle okay there are 6 trigonometric ratios 6 ratios are there namely sine the name of the operation or trigonometric ratio is sine and the angle of evolution which I have taken into consideration is theta. So the first ratio becomes sine theta. Second ratio is cos theta. Third ratio is tan theta. These are the basic three ratios: sine theta, cos theta, and tan theta. The other three ratios are the reciprocals of these ratios. Remember, these are reciprocals, not inverse. When is come to just match pormut तोतम असु तो वन रेसिप्रोकल्स इनवर्सस में ज्यादा पाने फर्क है मगर ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल्स इनवर्सस छ फर्क ये sin थीटा रेसिप्रोकल छ cosec थीटा नॉट sin नुक इनवर्स cosec थीटा के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री छ ऑनवर्ड सच 12 हस तो यवन सच ब्रो को यवन सच येतनस के येतनस वन रेसिप्रोकल तो याद रेसिप्रोकल नॉट इनवर्स वन जो sin रेसिप्रोकल तच वन cosec थीटा cos रेसिप्रोकल तच वन sec थीटा and tan of reciprocal that is one cot theta. These are the 6 trigonometric ratios that we have to discuss in class 10. Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. The reciprocal of sin theta is cosec theta, the reciprocal of cos theta is sec theta and that of tan theta is cot theta. Now, an important point. Here is aksar bachan confusion to that. Path can be defined in trigonometric ratios. As well as question short introductory lecture. अक्सर बच्चों जो भाषा यूज करने sin theta छो ये नो मतलब भाषा छो इस पर sin into theta. No, this is wrong. Sin theta मतलब छो नहीं है sin into theta. ये इस ब्रोह कुछ पढ़ा ऐसे माना यहाँ से function sin to function theta. इसका value छो दिवान. यह जो अल्टीमेट function ये ने समझ नहीं है इसका लोग simplify वो इस पर function क्या है sin theta मतलब क्या है For example, आपने कोई डॉक्टर राशिद deliver Rashid's call. Okay. This is the first thing. After my daughter Rashid deliver Rashid's call. Daughter Rashid, क्या ये word है मतलब डॉक्टर चुकना चीज तो राशिदन सोचो राशिदन no. ये चीज मतलब राशिद has such a person up his profession it's a profession to medical science. So to practicer सोचो आप medical practicer सोचो आप student medical medicine go doctor sim अगर डॉक्टर करो ने राशिद इश अलग डॉक्टर से पानस मीनिंग गई डॉक्टर राशिद इम साथ वनान छ एश दपन एश पाने तरफ फिक्र राशिद इज अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन मेडिसिन
Back Rashid's cover. You just suggest that I'm going to suggest Rashid. You never want to say sin theta. Sin theta मतलब छुन क्या sin जो confuse theta no. Sin theta मतलब छो ऐसे यहाँ से जो sin हसा च का खसूसियत theta यू तो value च दिवान सच खसूसियत क्या है सच ratio खसूसियत करो इस वाइन से मेरे पास ये क्या क्लियर होगा sin theta मतलब छो sin into theta ये best example ये बस मैं 5 क्लियर करूँ okay. Now we will define the first trigonometric ratio, that is sin theta. So we write sin theta. Sin theta go here. Sin theta is given because it's a function, it's a ratio function. Go here, मुझे दोन चीज़ पाना divide करना. ये बच्ची चीज़ ऐसी side को side दोन पाना divide करना. Sin theta go ये theta चीज़ angle of evolution consideration. Side opposite angle theta. Side opposite to angle theta divided by hypotenuse. ठीक क्या होना अब sin theta true so trigonometric ratio and मतलब ratio is kind of side opposite angle theta divided by hypotenuse. Okay, side opposite angle theta कुछ is AB, the hypotenuse कुछ that is AC. वो got your trigonometric ratio पर define sin theta it is defined as the side opposite to angle theta divided by hypotenuse, that is AB divided by AC. This is the first trigonometric ratio, that is sin theta. Now we'll move towards second trigonometric ratio, that is cos theta. Here it is cos theta. Again, it's a trigonometric ratio, so again we have to discuss about the ratio. Cos theta is side adjacent to theta, angle theta, sorry, divided by hypotenuse. Okay. Cos theta, it is side adjacent to angle theta divided by hypotenuse. Side adjacent to angle theta का क्षेत्रफल को क्या? So side is theta's lineage or so side पर theta चु. Clearly side को clearly is theta angle चु जो side BC है. वो side adjacent to angle theta is BC and hypotenuse it is AC. This is the second trigonometric ratio cos theta. Side adjacent to angle theta divided by hypotenuse. I hope that this is clear. Now we'll move towards the third trigonometric ratio, that is tan theta. Okay, you write here tan theta. Tan theta. Tan theta, it is side opposite to angle theta divided by side adjacent to angle theta. You know, side opposite to angle theta is AB and side adjacent to angle theta it is BC. Go tan theta is side opposite to angle theta divided by side adjacent to angle theta, that's AB by BC. Why should be at the separate from here tan theta to perpendicular bata base? No. Because actually as nish questions में आसान polygon या right angle triangle ये इतना कैसे और इम्पैक्ट this point actually was something base को जो perpendicular है. And the simple concept is deep concept है so how still गया theta को जो opposite side the adjacent side को अब तो इस पर थे यार दिखे जरूर confuse. कहीं तो कैसे सा answer confuse जो so clear theta को opposite side opposite to AB. अब मुझे बात था नहीं यार perpendicular या altitude. Okay. Here teachers with me is the tan theta equal to tan theta is compound sin theta divided by cos theta. Yes, it is also true. We say equal to true. Sin theta it is side opposite to angle theta divided by hypotenuse, that is AB divided by AC, and cos theta is side adjacent to angle theta, that is BC divided by AC. AC will go and it is AB by BC. Again same method. But ये तो शुद्ध ये था याद है क्या? ठीक है मुझे क्या बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना अगर मैं ये पढ़ना तो इजी कंफ्यूज इसे दुनिया प्रीम एक्सरसाइज तब मैं छुटे गणित क्वेश्चन या दुनिया क्वेश्चन ये तो इसे पानी ये क्लियर सो ये बस को मैं आपको टच ये बस तो बेसिक कांसेप्ट यार ये शुद्ध उन्हें याद होने था ओके नाउ व्हाट कैन I put trigonometric ratio is reciprocally fine. Okay, now we'll move towards that.